Hi, my name is Wajad Hussain and I welcome you all in this video. In today's video, we will see the example codes of chapter 9 and chapter 7. We will thoroughly go through and plus we will see how they work in Atman Studio. So basically, both of these chapters are related with the language C. So our main focus will be on the language C codes. So yeah, we will refer to the book which we are using in this course, and for the codes we will be referring the niceland.com website where all the codes are present. So we don't have to write them separately or individually. So we will get the help from the Niceland and we will run these codes in our Atman Studio C language C executable. So first of all, let us move towards the example 7.1 in which we are required to write an AVRC program to send value 00 to FF to port B. So just a reminder that these values are in hex. So yeah, let's move towards the Atmos Studio. So here is our code in which we first include the library as we usually do. So then we have the int main function which is of type void, which means we are returning nothing, and then we have characters initialize the character z पोर्ट DDRB को हमने इनपुट के लिए ले लिया है एंड हम उसके बाद ये जो हमने एक फॉर लूप लगाई है pardon me हम इसको आउटपुट पे ले रहे हैं सो DDRB हमारा आउटपुट हो जाएगा 1 1 चला जाएगा वी नो पोर्ट के ऊपर 1 1 आ जाए सो तो वो हमारा आउटपुट डिक्लेयर हो जाता है and then we initialize a for loop in which our starting value is 0 and then we apply a logic that this for loop should be executed 255 times. First when it will be executed, port B will be Z, and we have this Z plus plus. So ये एक दफा जब चलेगी तो ये जी इंक्रीमेंट हो जाएगा और ये तब तक चलती रहेगी जब तक हमारी वैल्यू जो है जी की वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 255 नहीं हो जाती सो बेसिकली ये जो हमारी है ये 256 दफा चलेगी अगर हम काउंटिंग में करें तो और चूंकि ये हमारी जीरो से स्टार्ट हो रही होती है तो इस वजह से हम इसको नंबर्स में 255 ले रहे होते हैं सो उसके और जैसे जैसे हम इसको चलाते जाएंगे हमारी पोर्ट बी के ऊपर वैल्यू जी की आती रहेगी सो इस तरह हम हेक्स की वैल्यू जो है वो अगर हम एफ एफ देखें तो ये 256 बनती है हेक्स में वैल्यू इसकी सो जब तक हम ये लूप चलाते रहेंगे हमारी वैल्यू इंक्रीमेंट होती रहेगी वहाँ पे और उस हमारी जो एट द एंड है वैल्यू वो 0xff आ जाएगी विच मीन्स 256 हम करवा देंगे वहाँ पे आई मीन 255 बनता है बट जीरो से चूंकि जा रहा है तो वो 256 हो जाएगा सो इसको अब एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं so yeah we have these registers with us and now we will see कि इसमें changes क्या आती हैं so अगर हम अब देखें तो अभी R24 के ऊपर 0xff था अब हम जीरो जीरो आ गया अब देखते जाएं इसको ये इंक्रीमेंट होता जाएगा जैसे जैसे ये लूप चल रही है वैसे वैसे हमारा ये जो रजिस्टर है ये हमारा इंक्रीमेंट होता जा रहा है so yeah this is it for this code now let us move towards the another code और हम उसमें देखते हैं कि हमारा हमसे क्या डिमांड की जा रही है और और हमने उसमें क्या कोड बनाना है so yeah just give me a minute that I'll open the book and I have this in hard form and I'm trying to find the second of the code of seventh chapter so pardon me for the delay
Just give me a minute. So yeah, we will do this online. So yeah, हमारे पास ये example two है. First, let me copy the code of example two, and then we'll come towards the book. Here it is. Write an AVRC program to send hex value for ASCII characters of 0, 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D to port B. So अब हम इसका कोड देख लेते हैं. कोड में उसी तरह हमने पहले अपने इंक्लूड करवाई है अपनी लाइब्रेरी. देन वी इनिशियलाइज अ फंक्शन इन मेन. अनसाइंड कैरेक्टर है माई लिस्ट के नाम से, और उसमें हमने ये सारे जो भी हमारी एक हमने बनाई है लिस्ट रेट, जिसमें हमने ये सारे डाल दिए जो जिनका आउटपुट हमें चाहिए था आस्की पे. एक हमने अनसाइंड कैरेक्टर जी इनिशियलाइज करवा लिए. उसके बाद डी डी आर बी को 0xFF कर दिया है. और अब यानी हम इसके ऊपर आउटपुट भेजना चाह रहे हैं. एंड देन वी हैव दिस फोर लूप जिसमें जीरो से हम स्टार्ट कर रहे हैं और लेस देन 10 तक जाएंगे. और चूंकि हम यहाँ पे देखें 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. सो या टोटल आर 9. सो जैसी जैसी हमारी होगी, तो अगर हम जी लेस देन 10 देखें तो ये हमारी जीरो से अगर स्टार्ट हो तो ये 9 ही बनती है. एंड हमारी हर दफ़ा जी प्लस प्लस होता जाएगा, यानी जी में इंक्रीमेंट आता रहेगा. और पोर्ट बी के ऊपर जो माई लिस्ट की है, माई लिस्ट में जी की जो वैल्यू है जो जी पे होगा, वो उसका इंडेक्स हमने यहाँ पे दे दिया, वो हमारा प्रिंट होता रहेगा. सो हम देख लेते हैं. हम इसको डिबग करके चेक करते हैं. सो स्टार्ट डिबग. तो यार वी हैव दिस. सो अब हम देखेंगे पोर्ट बी के ऊपर हमारा क्या चेंजेस आती हैं. हम देख लेते हैं. D28 के ऊपर हो रहा है, F0 है फिलहाल. ये हमारे आस्की शो हो रहे हैं हमारे पास. अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे आस्की शो हो रहे हैं इन सब वैल्यूज के लिए. सो दैट इज इट. सो जो हमारा डी होगा वो 44 के ऊपर होगा हमारा इसमें. सो ये हमारा दूसरा कोड था. लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर एग्जांपल 3. राइट एन AVRC प्रोग्राम टू टॉगल ऑल द बिट्स ऑफ पोर्ट बी 200 टाइम्स. सो इसको हमने पोर्ट बी को 200 टाइम्स करना है. इसका कोड कॉपी कर लेते हैं नाइशल लैंड से. एंड just hit the copy button. I think I should stop debugging first. So Control V, yeah. So Control A and Control V are very important in the engineering, basically, and specifically if I talk about the programming, it's nice to have your own codes, and you must do your own codes. But for cases like ours, if you have 70 to 80 plus codes, and there is a margin that you can use the online services जिसमें already codes बने हुए हैं, then I think it's a better choice to use them than to write your own codes for 70 to 80, and if you are have a very limited time. So yeah. So अब हम इस एग्जांपल को देख लेते हैं. और एग्जांपल में हमें कहा गया था राइट AVRC प्रोग्राम टू टॉगल ऑल दी बिट्स ऑफ पोर्ट बी 200 टाइम्स. तो हमें पोर्ट बी की जो पोर्ट बी को 200 टाइम्स टॉगल करवाना है. सो नाउ लेट अस स्टार्ट द डिबगिंग फर्स्ट. तो हमने सबसे पहले डी डी आर बी को जो है वो उसके ऊपर हमने एफ एफ भेज दिया, यानी आउटपुट है हमारी पोर्ट बी जो है वो उसके ऊपर हमने ये वैल्यू इनिशियलाइज करवा दी है. अनसाइंड कैरेक्टर जी एक इनिशियलाइज करवाया हमने. फॉर लूप लगाई है. फॉर लूप में जी इक्वल्स टू जीरो इनिशियल कंडीशन है हमारी. और जी जो है वो चूंकि जीरो से स्टार्ट होगा, सो हम इसको लेस देन 200 कर रहे हैं. जब ये 199 तक पहुंचेगा तो ये बेसिकली 200 टाइम्स रन हो चुकी होगी. और उसी तरह
जी प्लस प्लस है, पोर्ट बी के ऊपर नॉट पोर्ट बी चली जाएगी। सो अब हम इसको एक दफ़ा करके देखते हैं। सो अब हमें ज़्यादा बेहतर अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कैसे काम करेगी। तो वी स्टेप इनटू हमारा रजिस्टर 24 के ऊपर 0xFF जा चुका है। नाउ व्हाट हैपेंड, let me see. I think I just pressed the wrong button. Yeah. So step into, ये हम आगे 24 के ऊपर जिसके प्रेफरेंस जा रहा है। देन वी हैव दिस। ओके। सो अब हमारा R24 के ऊपर ए आ चुका है, पोर्ट बी के ऊपर जो कि हम बात कर रहे थे। और R25 के ऊपर 0xC8 आ चुका है, विच इज सम काइंड ऑफ हेक्स वैल्यू। सो अब हम इसको चलाते हैं तो ये हमारी 200 टाइम्स चलना चाहिए। तो बेसिकली जो हमारा बी था वो आई गेस इफ वी कंटिन्यू फ्रॉम हेग्स, सो हेग्स में हमारा जस्ट जस्ट टू बी श्योर, आई गेस 10 हमारा ए होता है। और उसके हिसाब से हम चल रहे थे। सो हमारा ये जो बी शुरू में यहाँ पे जो बी था वो 11 को शो कर रहा था। एंड जब हम इस पूरे को करते तो वो 200 टाइम्स ही बन जाना था। सो या जो ए है, इट मीन्स कि 10 है, और उसको जब ऐड कर लेंगे तो 200 बन जाएगा। सो या सो जब हमने ये इनिशियलाइज करवा दिया एक दफ़ा और हम उसमें डिक्रीमेंट ही किए जा रहे हैं एक एक दफ़ा, सो हमारा ये तकरीबन 200 टाइम्स लूप चल जाएगा। सो हम अगर देखें तो A5 A3 A2 A1 A0 एंड देन वी हैव 9F। सो या ये हमारा 200 टाइम्स इसी तरह चलेगा, क्योंकि हमने वो जो शुरू में वैल्यू इनिशियलाइज करवाई थी उसके अंदर डिक्रीमेंट होता जा रहा है और वो हमारे पास ये 200 टाइम्स टॉगल हो जाएगा। सो नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ आवर्स which is of yeah 7 4। सो इसको कॉपी कर लेते हैं। oops, या तो हमारी ये 7 4 एग्जांपल आ गई। आई शुड स्टॉप डिबगिंग and yeah, write an AVRC program to send values of minus 4 to +4 to port B। तो अभी हमें बेसिकली -4 से +4 तक वैल्यूज भेजनी है पोर्ट बी के ऊपर, विच इज क्वाइट इजी आई गेस। सो हम सबसे पहले तो हमने अपनी लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दी। देन वी इनिशियलाइज द मेन फंक्शन कैरेक्टर माइनम के साथ एक हमने वो बना अरे बना दी है, अनसाइड कैरेक्टर है जिसमें हमने अरे में हमने -4 से +4 तक कर दिए। सो बेसिकली हमारे पास ये डिजिट्स जो बन रहे हैं वो हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 4 8 एंड देन वी हैव दिस जीरो इन द मिडल। सो इन टोटल वी हैव 9 नंबर्स। सो अब अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने यहाँ पे कंडीशन ये जो इक्वल की लगाई है, इसी वजह से लगाई है कि 0 से जब 8 तक जाएगी तो बेसिकली 9 ही हो जाएंगे हमारे। सो अब हम इसको चला के देख लेते हैं, एक दफ़ा डीबग करते हैं एंड देन वी विल सी द रिजल्ट्स ऑन द registers। So step into, yeah, so we can see on these R18 and R30 की हमारी values change हो रही हैं।
1 2 3 4 या सो बेसिकली जो शुरू में हमारे पास आ रही थी, मैं दोबारा डिबग कर देता हूँ ताकि हम ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ लें। जो अभी शुरू में वैल्यूज आएंगी, ये हमारे पास चूंकि माइनस में है तो उस वजह से ये आ रही है। बेसिकली ये माइनस वाले को जब हम प्लस में कर रहे हैं, जो हमने पहले भी देखा कॉम्प्लीमेंट लेके, टूज कॉम्प्लीमेंट या वंस कॉम्प्लीमेंट के साथ, सो ये उसकी वैल्यू अगर हम हेक्स में करें तो ये हमारे पास इस तरह 0xFD आएगी। और जैसे जैसे हम इसमें चलाएंगे, सो नाउ वी हैव दिस 0 which is was in the middle, and now if I step into, so our values goes to 0x01, 0x02, 0x03, and last one 0x04. So this was our last number in the this 4. So वो हमने अभी R18 के ऊपर प्रेजेंट करवा दिए। Yeah, so let us move towards the next example, which is 05. Copy that, stop debugging. So our fifth example is write an AVRC program toggle all bits of port B 50,000 times. So ये उसी तरह का सवाल है जिस तरह हमने पहले देखा था, जिसमें हम 200 टाइम्स कर रहे थे। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स की 50,000। सो इसको भी एक दफ़ा डिबग कर लेते हैं, एंड वी विल सी द रिजल्ट्स ऑन रजिस्टर्स। सो सो या सो हमने जो शुरू में चीज़ की थी वो, अगर हम इसकी लॉजिक थोड़ी सी देखने की कोशिश करें। Let us first convert this into plus x to y deci. So this is 85 in decimal, and if we see 0xa, so a 170 copy. If we see this on calculator, 170 multiplied by 85. Okay, so अच्छा हाँ, मुझे समझ आ गई। ये हम लूप जो है वो 50,000 टाइम्स ही चला रहे हैं। सो आई वाज कंफ्यूज्ड विद दिस कि हम शायद ये जो है इसमें एक सेकंड लूप लगा रहे हैं और उसके साथ हम जा रहे हैं। सो वी आर नॉट डूइंग दैट। सो बेसिकली हम यहाँ पे जो है वो 50,000 की हमने कंडीशन लगा दी है। जीरो जी जो है वो हमसे कम होगा, तो हम एज जीरो से स्टार्ट दे रहे हैं, सो उससे हमने कम की कंडीशन लगाई है। सो इट विल वर्क फॉर अस। तो अब हम देख लेते हैं इसमें कि पोर्ट पोर्ट बी के ऊपर अब हमारे R18 के ऊपर 0xa आ रही है। और इफ वी स्टेप इनटू, सो दिस विल गेट just wait, debugging। ओके, सो ये R24 के ऊपर चेंजेस कर रहा है। और 4C, जस्ट वेट के हम देख लेते हैं कि इसमें स्टार्ट इसने कहाँ से किया था। तो इट स्टार्टेड फ्रॉम C0, और उसके बाद ये हमारे पास स्टेप, जैसे ही हम स्टेप डाउन करते आए हैं तो इसकी वैल्यूज चेंज होती रही होती रही होती रही हैं। सो इन दिस मैनर ये एक 50,000
दफ़ा ये पोर्ट बी को टॉगल करेगा, मतलब पोर्ट बी के ऊपर डिफरेंट वैल्यू भेजेगा। सो अब हमारी अगली एग्जांपल जो है वो है सिक्स एग्जांपल। लेट अस कॉपी दिस, स्टार्ट डीबग। सो ये वही है जो पहले हमने देखा कि अब हम जो पहले उसकी वैल्यू वैल्यू थी वो 50,000 थी, अब हम उसको 100,000 टॉगल करवा रहे हैं। सो आई गेस ये कोड तो हम अभी देख चुके हैं। सो वी विल मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट कोड, सो ताकि हम अपना टाइम थोड़ा सा बचा सकें। So, हमारी अगली एग्जांपल है राइट एन AVRC प्रोग्राम to toggle all bits of port B continuously with a 100 millisecond डिले। सो इसमें अब हमारे पास डिले वाली जो चीज़ थी वो भी आ रही है। assume that the system is at mega 328B with x star is equals to 8 megahertz। सो अब हम इसमें साथ साथ देखेंगे कि हमने डिले को कैसे कैटर करना है। तो हमारी एग्जांपल है 7। तो ये हमारे पास आ गई है 7th हमारी जो एग्जांपल है, जिसमें हमने बेसिकली यहाँ पे एक डिले का फंक्शन डाला हुआ है, वॉइड डिले। और उसको हम शायद यहाँ नीचे उस फंक्शन जो है उसको ऊपर डिक्लेयर किया और उस पूरे फंक्शन की डिटेल्स हमने नीचे दी है, जिसमें हमने वोलेटाइल अनसाइंड लॉन्ग आई एक वेरिएबल हमने डिक्लेयर करवाया और उसके साथ लूप लगा दी है, जो कि चल जो कि हमारे पास चलेगी 470,659 टाइम्स। सो ये हमारी जो लूप है, जैसे जैसे हम कॉल करवाएंगे इसको ऊपर, तो ये हमारी उतनी दफ़ा चलेगी। और आप देखें पोर्ट बी के ऊपर हमने 0x ए वैल्यू इनिशियलाइज करवाई, फिर हमने डिले का फंक्शन कॉल करवाया, जिसकी जिसको हमने डिक्लेयर ऊपर किया था, वो सारा उसका जो फंक्शन बनाया है हमने वो नीचे। और उसके बाद फिर से पोर्ट बी को हमने कॉल पोर्ट बी के ऊपर 0x55 वैल्यू भेज रहे हैं और उसके बाद दोबारा से डिले कॉल करवा रहे हैं। सो इसको रन कर लेते हैं एक दफ़ा। सो बेसिकली हमें डिले जो है वो तब नज़र आएगा जब हम इसको प्रोटियस के ऊपर कोड को रन करेंगे, जब हम एलईडी साथ लगाएंगे। तो सी कि हमारी जो एलईडी है वो 100 मिली सेकेंड के डिले के साथ लिंक करेगी। सो अभी तो हम सिर्फ वैल्यूज चेक कर रहे हैं। सो अभी हमें सिर्फ वैल्यूज नज़र आएंगी, जैसे कि हम पहले रजिस्टर्स के ऊपर देखते रहे कि 0x A एंड 0x FF। सो आई थिंक कि ये हमें सही समझ आएगा जब हम इसको प्रोटीज के ऊपर करेंगे। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट एग्जांपल व्हिच वी हैव 7 8। तो 7 8 एग्जांपल में पूछा गया है कि राइट एन ABRC प्रोग्राम to toggle all the inputs, all the pins of port C continuously with 10 millisecond delay। तो ये भी उसी तरह का ही है जैसे कि हम बना चुके थे। तो इसमें बेसिकली बस उसने किया ये है कि इंट मेन का पहले एक मेन फंक्शन बनाया और पहले उसने वॉइड डिले का एक फंक्शन बना दिया और उसको वहीं पे डिक्लेयर करके साथ ही पूरा फंक्शन उसने बनाया। और उसके बाद उसने एक लूप लगाई है, वाइल लूप, जिसमें हम पोर्ट बी के ऊपर अब हम पहले वैल्यू इनिशियलाइज करवाई 0x और उसके बाद डिले वाले फंक्शन में हमने हमें जितना भी डिले चाहिए हम वो इंटीजर लिख रहे हैं। क्योंकि हमने वॉइड टू फंक्शन जब बनाया था तो उसमें हमने पैरामीटर में ये लिखा था कि जो इंट डी, जो हमारा ये वेरिएबल इंट डी है, ये बेसिकली
उस उतनी अमाउंट को शो करेगा जो हमने डिले डालना है इस फंक्शन में। सो जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारा एक नीचे एक डिले का फंक्शन है, डिले एम एस और डी, ये उसको पास हो जाएगा और हमारे पास इतना डिले आ जाएगा। सो हम नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं, which is LEDs are connected to pins of port B, right, in a VRC program that shows the count from 0 to FFH। so ये बाइनरी में हमें शो कर रहा है कि 8 बिट बाइनरी में तमाम बिट्स 0 और 8 बिट बाइनरी में तमाम बिट्स 1 ऑन LEDs। सो हम इसका कोड देख लेते हैं, 7 9 एग्जांपल होगी हमारे पास ये। स्टार्ट। तो आई गेस ये मेरे कुछ मिसप्लेस हुआ है क्योंकि कोड जो यहाँ पे हमारे पास, ओके ओके कोड इज फाइन। तो बेसिकली हमने सबसे पहले अपनी वो लाइब्रेरी इंक्लूड करवा दी। देन वी हैव दिस मेन फंक्शन व्हिच इज ऑफ टाइप void, क्योंकि हम रिटर्न कुछ भी नहीं कर रहे। देन वी इनिशियलाइज दी पोर्ट DDRB, उसको हमने आउटपुट के लिए डिक्लेयर कर दिया और वाइल लूप लगाई है और पोर्ट बी इक्वल्स टू पोर्ट बी प्लस वन, पोर्ट बी में वन ऐड ही करते जा रहे हैं जो भी उसकी वैल्यू होगी। सो स्टेप इन टू। सो ये जो हमारा डिले था ये बिल्ट इन फंक्शन था। जैसे ही हमने इसको एक दफ़ा कॉल करवाया, सो ये अब हमारे पास पूरा डिले का वो एच फाइल खुल गई है जिसमें हमने ये पहले से बना हुआ है और उसमें वैल्यू भेजी है और उसके बाद अब ये यहाँ से हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है। सो ये थोड़ा टाइम लगा रहा है कंप्यूटेशन में। Okay। So here we have the example 10 in which we are asked to write a code to get a byte of data from port B and then send it back to port C। So इसमें basically हमें करना ये है कि हमें पोर्ट बी से एक पॉर्डन नहीं पोर्ट बी से एक डाटा लेना है और पोर्ट सी के ऊपर उसको भेज देना है। सो अब हम पहले ये करेंगे, पोर्ट बी के ऊपर हमने जो है उसको इनपुट के तौर पे ले लिया, 0 0 भेजा हुआ है, पोर्ट सी 0 XFF यानी 1 1 भेज दिया और हम इसको आउटपुट के लिए कंसिडर कर रहे हैं। सो इस पे हमने डाटा लेना है और इससे भेजेंगे हम। सो अब हम इसको चला के देख लेते हैं। सो हमने एक लूप लगाई है वन, जिसमें हम टेम्प एक वेरिएबल ले रहे हैं जिसमें पोर्ट बी से डाटा था वो टेम्प पे जाएगा एंड देन फ्रॉम टेम्प टू वी विल ट्रांसफर इट टू पोर्ट सी। सो अगर हम देखें अब, सो R24 के ऊपर 0 X 0 0 एंड
हमें अब इसके ऊपर वैल्यू भेजनी भी है। सो विंडोज पोर्ट पी के ऊपर हम बी के ऊपर वैल्यू देते हैं 1। और अब हम इसको कहते हैं रीवर्ट। सो टेम्प पे 1 आ गई। उसके बाद पोर्ट टेम्प के ऊपर 1 आई तो पोर्ट सी के ऊपर भी 1 आ गई। और यही हमारा ये पूरा प्रोसेस चल गया। हमने पोर्ट बी के ऊपर 1 दी थी, उस पोर्ट बी से टेम्प के ऊपर 1 आई एंड फ्रॉम टेम्प वेंट टू पोर्ट सी। और हमारी 1 ही वैल्यू जो है वो पोर्ट सी के ऊपर भी आ गई। सो अब नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ मूव करते हैं। सो हमारी नेक्स्ट एग्जांपल होगी 711, जिसमें write an AVRC program to get a byte of data from port C. If it is less than 100, send it to port B, otherwise send it to port D. सो हमें बेसिक करना ही है कि हमने पोर्ट सी से डाटा देना है, और अगर वो 100 से कम है तो हमें पोर्ट डी के ऊपर भेज देना है, और अगर 100 से ज़्यादा है तो हम उसको पोर्ट डी के ऊपर भेज देंगे। सो दिस इज आवर लैब एग्जांपल 7, जिसमें हमने लेस देन 100 वाला परफॉर्म करना था। सो अब हम इसको देख लेते हैं कि हमारी लैब कॉपी कॉपी कॉपी। सो बेसिकली हमने पोर्ट सी के ऊपर 0 इनिशियलाइज करवा दिया, पोर्ट बी को हमने आउटपुट, एंड देन वी डिसाइड टू गो विद द पोर्ट बी आल्सो आउटपुट। अब हमने एक लूप इनिशियलाइज करवा दिया, उसमें हमने एक टेम्प के नाम से एक अनसाइन कैरेक्टर हमने ऊपर में लिया था। और उसके बाद हमने इफ एल्स की कंडीशन लगा दी। जो हमारे पास जो टेम्प है वो इक्वल्स टू है इन सी का मतलब सी के ऊपर इनपुट लेना चाह रहे हैं। सो हमारे पास इनपुट आएगी पोर्ट सी के ऊपर, उसके साथ हम कंपेयर करना चाह रहे हैं कि टेम्प अगर हमारा लेस देन 100 है तो पोर्ट बी के ऊपर चला जाएगा, और अगर हमारा लेस देन और ग्रेटर देन 100 है एलसी कंडीशन में तो वो पोर्ट डी पे चला जाएगा। स्टेप इन टू करके देखते हैं। सो टीडीआर पी के ऊपर हम इनिशियलाइज करवा देते हैं। अगर हम 80 रखते हैं, सो हमने 80 रख दी है वैल्यू। सो एक काम करते हैं, इसमें हेक्स की वैल्यू डाल के देखते हैं कि क्या होता है। सो टीडीआर सी ओ ओके, हमें टीडीआर सी में वैल्यू पुट करनी थी। सो हम ये देख लेते हैं कि 100 अगर हम करते हैं तो ये किस में जाएगा। सो आई गेस यहाँ पे कोई इशू आ रहा है। लेट मी चेक कि उसमें क्या इशू है। सो हमें टीडीआर सी पे 0 वैल्यू दी हुई है। इनिशियल डाटा है हमारे पास 0 पे। ओके ओ ओके ओके ओके, हमने टीडीआर सी के ऊपर ही वैल्यू 0 दे दी है। सो बेसिकली हम वैल्यू दे ही 0 रहे हैं। सो इसी वजह से हमारी पोर्ट बी के ऊपर भी 0 आ रही है, पोर्ट डी के ऊपर भी 0 आ रही है। सही है। सो हमारी यही वैल्यू आएगी। तो अगर हम इसको यहाँ से चेंज कर देते हैं तो हमारी पोर्ट बी या पोर्ट के सी के ऊपर वैल्यू चेंज हो जाएगी। सो आई एम नॉट डूइंग दैट। सो अगर आपको इजी लगे तो आप कर लीजिएगा। नाउ लेट अस मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट एग्जांपल, व्हिच इज
12. Let's copy this and paste it. So अब हमारी जो example 12 है, it is we are asked that run the following program on your simulator and examine the results. So हमें ये प्रोग्राम रन करना है और जो हमारी वो है रिजल्ट्स हैं उनको देखना है कि वो क्या कह रहे हैं हमें और हमारे आउटपुट क्या आता है। तो हम इसको डीबग कर देते हैं। हमारे पास तीनों आउटपुट के ऊपर है। सो फिर स्टॉप दी डीबगिंग और हम दोबारा से डीबग करके देखें। सो हमारा R24 जो है उसके ऊपर वैल्यू चेंज होंगी, हमें वो ऑब्जर्व करनी। 0xFF आ गया, 0xFF एंड यहाँ पे आके हमारी वैल्यू चेंज हुई है। सो पोर्ट बी के ऊपर जो है वो हमने मॉड्यूलस दिया था, उसके साथ आ रही है। अब हमारा और फंक्शन है एंड देन वी हैव दिस नेक्स्ट ऑपरेशन है पोर्ट डी, और अब हमारे पास 2C आ गए विच इज ऑफ नॉट के साथ आ रहा है। सो हमारे R24 के ऊपर हमारी वैल्यू आ रही है। सो अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं विच इज एग्जांपल 13 और हम देख सकते हैं कि हमें क्या करना है। So paste it here, debug करके देख लेते हैं। ओके, दूसरी भी गलत पेस्ट कर दी। Stop debugging, debug again and this time अब हम ऑब्जर्व कर लेते हैं कि हमारे पास वैल्यू क्या चेंज हो रही है। सो R24 के ऊपर FF आउटपुट, पोर्ट बी के ऊपर हमें 16 वैल्यू आ रही है। सो आई गेस दैट वाज इट, हमें यही चेक करना था। So 4 times continuous without disturbing the rest of window 4B। अच्छा, बिग 4 को हमने टॉगल करना था, तो आई गेस हम कर चुके हैं। Debug and fix it. So yeah, ये इसकी अगर हम जब प्रोटीज के ऊपर करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पता लगेगा कि प्रोटीज के ऊपर इसकी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है। जब हम एक ब्लिंक की एलईडी लगाएंगे साथ और ब्लिंकिंग फंक्शन उसका देखेंगे तो एलईडी पे हमें ज़्यादा बेहतर पता लग जाएगा कि हमारी वैल्यू कैसे चेंज हो रही है, और वो आया सिर्फ यही बिट्स को चेंज, इन्हीं बिट्स को चेंज कर रही है या नहीं विदाउट डिस्टर्बिंग द फोर्थ बिट। ओके, सो अब हम अपनी नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं विच इज एग्जांपल 14। तो ये हमारी एग्जांपल है 14 एग्जांपल, जिसमें हमें ये देखना है कि AVR C program to monitor 5 bit of port C. If it is high, send 55H port B, otherwise AH to port B। So ये वही है जिसे हम पहले देख चुके हैं, हम दफा चेक कर लेते हैं। ये आ गया, then we have this 55।
तो ये सेम उसी तरह जैसे हमने पहले देखी थी। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द 15th एंड इसको देख लेते हैं कि इसको हमने कैसे करना है। So kitchen and so start the video. So ये हमारी इनिशियल थी पोर्ट डीडीआर बी को हमने किया था, पोर्ट डीडीआर सी को ये दिया था। while if in b and this is not equal to 0, पोर्ट सी के ऊपर ये चल रहा है, else पोर्ट सी के साथ ये आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से यही आ रहा है। now moving towards the next example 16 copy the data pins of LCD are connected to port B. The information is flashed into the LCD whenever its enable pin goes from high to low. The enable pin is connected to 5 pin 5 of port C. Shemi pin आ जाएगी हमारे पास, right? CPU का ampersand the earth is but one country to LCD. So ये basically हमारा LCD का कोड है जो हम प्रोटीएस के ऊपर बेसिकली करते हैं, बट अभी हम AVR के ऊपर उसको देखेंगे। तो या सॉफ्ट डिबग कर सकते हैं, ट्रेन करते हैं। हाँ, आई डोंट नो कि हम यहाँ पे ये शो करवा पाएंगे कि नहीं कि अर्थ इज बट वन कंट्री, बट लेट अस सी क्या बनता है। डिबग करके देख लेते हैं। तो साइन कैरेक्टर आ गया, ये आउटपुट और मैसेज आ गया। मैसेज को अगर हम ओपन करके देखते हैं, so it's of 28 bits, इसके ऊपर हमें मुख्तलिफ वैल्यूज मिल रही हैं। तो देखते हैं। नेक्स्ट इज आर फोर सी, फोर बी के ऊपर 84 वैल्यू चली गई, फोर सी के ऊपर 32 बिट्स की वैल्यू आ चुकी है। ये हमारा था ये वाली एग्जांपल। नाउ वी मूव टुवर्ड्स द आर 17 कॉपी। तो हमें 17 में ये करना था कि we have C program to read pin 1 and 0 port B and issue an ASCII character to port D according to the following table। so हम इस टेबल को करके कर लेंगे। सो पोर्ट डी के ऊपर हमारी वैल्यू है, ले जाए तो पोर्ट बी को हमने आउटपुट प्ले कर दिया, केस 1 पे आ गए सीधा, केस 0 केस 2 केस 3। सो ये अब हमारी नेक्स्ट एग्जांपल 18 चला के देख सकते हैं। सो ये अब हमारी अगली आ गई है, जिसमें हम इसको अब डिबग करते हैं। सो हमसे पूछा जा रहा है कि रिटर्न AVRC प्रोग्राम टू मॉनिटर bit 7 of port B, if it is 1 make bit 4 of port B input, otherwise change the pin 4 of port B to output। तो इसको रन करके देख सकते हैं। तो ये अब हम इसको रन कर रहे हैं।
ये हमारी nineteenth example, write an ABRC program to get the status of bit 5 of port B and send it to bit 7 of port C continuously. So हमें ये अब रन करनी है. तो ये हमारी सक्सेसफुल रन होगी. Now we will move towards the our next example. ये इधर इतना लंबा कोड दिया हुआ है, उधर तो छोटा सा दिया हुआ है. बीच में अच्छा पार्ट अपनाया है अगला में. ठीक है चलो. हमारा 28 ये वाला कोड ये है, इसको रन कर लेते हैं. -85 -86 85 ये बेसिकली टॉगल करवा रहे हैं हम इसको. हम अगला देख सकते हैं. 23 या क्या. तो अब हमारे पास ये आ चुका है. कोड डीबग कर देते हैं और उसके बाद स्टेप इनटू -5 -6 तो बेसिकली अब इसमें भी हम टॉगल ही करवा रहे हैं. तो फ्रॉम डिफरेंट मेथड हम उसकी पावर में जो एफ दे रहे हैं तो उससे चेंज हो रही है उसकी वैल्यू. इसको स्टॉप रन कर लेते हैं. नेक्स्ट पे चलते हैं. तो नेक्स्ट वी हैव दिस 21 AC कॉपी. सॉरी सेकंड टू. अब हमारी ये 23 है. इसको देख लेते हैं. तो हमारी एग्जाम्पल है 23 वाली जो कि हमारी एग्जाम्पल है. इसमें पेस्ट और 23 वाली अब हम दिखाते हैं. 23 वैसे 22 जो कोड नहीं था कुछ बस. 23 में हमारे पास ये इसमें भी अब 7 बेडरूम मॉनिटर करना पड़ती. तो if it is one make word 4 of 4 be input as well. ये सेम ही है. इसको छोड़ते हैं. Moving towards next one. ये हमारे पास राइट है नहीं BRC program to convert back BCD 29 to ASCII to one display bytes of port B and port C. So इसको देख लेते हैं. हमारे पास एग्जाम्पल 26 है. तो एग्जाम्पल 26 ये रही. कॉपी कर लेते हैं. डीबग करके देख लेते हैं इसको. तो हमारे पास ये आ गई है. हमारे पास ओहो सेव करना था. चलो कोई नहीं. सेव कर लेते हैं इसको. तो इसको स्टॉप करते हैं और दोबारा से इसको स्टार्ट टेबल पे. सो
I guess कोई चीज सेव करनी थी एंड उसको सेव करना था. ओके सो इसको बाद में देखेंगे इस वाली को. अगली एग्जांपल हम देख लेते हैं जो हमारी एग्जांपल है. तो देख लेते हैं अगर ये सेम एग्जांपल है इसकी तो नेक्स्ट पे मूव कर जाते हैं. तो सेम ही 28 जो है वो तो कुछ भी नहीं है. हम देख लेते हैं अगली 31 देख लेते हैं हम एग्जांपल. सो दिस इज आवर 31st एग्जांपल. इसको कॉपी कर लेते हैं और एवीआर पे चलते हैं अपने. ए तो अब हम देख लेते हैं इसकी वैल्यूज क्या क्या आती हैं हमारे पास. पोर्ट सी की वैल्यू 5 होगी है. तो ये अनडिफाइंड दे रहा है पता नहीं क्या. वीडियो पे चलते हैं. Towards our next example, which is 33. कॉपी कर लेते हैं उसी वाली है. अब हम इसको जरा स्टार्ट टेबल के लिए 68 वैल्यू आ गई थी नीचे. 36 उसी के ऊपर 8 वैल्यू होगा. ये हमारे लूप तब तक चलता रहेगा जब तक 8 दफा पूरी नहीं हो जाती. अभी आ चुका है यहाँ पे. अब हम इस नेक्स्ट जो वो है 33 थी. Yeah, basically that's it. Just a few examples. So अब हम 36 वाली जो है हमारी उसको देख लेते हैं एग्जाम्पल को. And then we will conclude this chapter 7. Start copy and we basically want for today it will be start. So I guess there are some issues. There was some kind of error.
stop पे में दोबारा करते हैं start your this is giving error now. So here we conclude our chapter 7. We will continue from here with chapter 9 and we will see its examples in the next session. So yeah, it's next session for me, but you guys it will be a combined video. So yeah, I will see you in the next video. That's all from my side. Take care. Bye bye. So we will start from where we left last night. So we are going to do our example 9.1, in which we just hold on a second. Let me open the book so we can verify the statement of the R code. So here is the statement of our problem, in which we are said that we are creating a square wave of 50% duty cycle with equal portion high and low on the port B 5-bit. Timer 0 is used to generate the time delay, analyze the program. So we have to analyze the program. I copied the code from Niceland website, so you can go there and check out the code. So let us debug this code first, and then we will see what's inside of this code. So let us now step into this code, and yeah, we can see on the R24 registers that our value has changed from 00 to 0x07, and R25 is equals to 0x088, and same goes for the .micro int stack. R24 becomes 0x06 and R25 becomes 0x10. And now our port B is value is 0 and R17 value is also 0. So now let us move towards the next example of ours, which is I guess 9.4. So basically 9.4 is just a question. So we will discuss it later. Let us now move towards the example 9.5, in which we are said that calculate the frequency of square waves generated on pin port B5. Assume that x stall is equals to 8 megahertz. So we will see that how our the square wave frequency of square wave is on the port B. So firstly, let us copy the code from Niceland, and now let us begin the debugging. Yeah, so let us now step into this code, in which we can see that our R24 registers value is changing from 00 to 0x08, and our port B value is 0 and R17 is also 0. So now we will see our next example, which is 9.6. So I guess this code was for 9.6. We already saw it, so we will move towards the next example. 9.7 states that assuming that x stall is equals to 8 megahertz, write a program to generate a square wave with a period of 12.5 microsecond on pin port 3.
port B3. So we will see its code, and first let us see the description of this problem. It states that for a square wave with t is equals to 12.5 microsecond, we must have a time delay of 6.25 microsecond. And here's the reason for that. Because x stall is equals to 8 megahertz, the counter counts up every 0.125 microsecond. This means that we need 6.25 microsecond divided by 0.125 microsecond, which equals to 50 clocks. So we subtract this 50 clocks from our 256. So our answer is 206, and if we convert this 206 in hex, so we will get 0xce. Therefore, we have this. So now let us move towards our code. So just let me. So here is our code, which I already debugged. So So our example 9 states that modify uh, in example 9.7 to get the largest time delay possible. Find the delay in the microseconds in your calculation. Exclude the overhead due to the instructions in the loop. So now let us see our code for this example. So firstly, we will add the definition of int stack and SPI DDR B3. So we port B3 pin is set as an output, and we will toggle the D3 of R17 here. Then we toggle the PB3, which is port B pin 3, and for time delay we have this function of delay in which we load timer 0 with 0 and then timer 0 normal mode in clock and no prescaler. So then we have this function of again, and which reads the TIFR if TOVO is set skip next instructions, then we stop the timer 0 and clear TOVO flag. So now let us move towards this code. We will debug it and see what's the changes on the registers. So our next example is 910, which is actually of a sort of a question. So we will skip it for now. Moving towards our example 914, in which we are stated that assuming xstall is equals to 8 megahertz, write a program to generate a square wave of 125 hertz frequency on pin port B3. Use timer 0 normal mode with prescaler 256. So we will see its code. Its number is 914. So just let us go to the next line and open it, the 14th example. Yeah, so we were on our 914 example. So let me just stop the debugging first, and I will paste the code, and we will start debugging.
Yes. As we see the description of our code earlier, so now we will move towards the stepping into function and we will see the changes on our registers. So here we go. As you can see the changes on R24 register, which was 0x00 and now it's changed to 0x07, and R25 is 0x088 after the stepping into function. And yeah, so now moving towards the next example, which is of which is actually 917. As we know that other examples are just of sort of questions, so we will do them later on in our video. So just for the sake of uh, short video, I'm skipping those examples. So we have example 917 in which we are stated that in the following program we are creating a square of 50% duty cycle. So it's actually a bit similar to the first 914 which we discussed earlier. So we will skip it for now. 918 is also a question. We will move towards 919 in which we are set to find the delay generated by timer 0 in the following program. Do not include the overhead due to instruction xstall is given that it's 8 megahertz. So as we can see, we firstly set the port B pin 3 as an output. Then we load the timer 0 and then we actually stated that our timer 0 CTC mode and prescaler is equals to 64. Then we have the label again in R20 read TIFR. Then we have if OCFO flag is set, skip next instruction. Then we have stop timer, and this actually this line is not compulsory. If you want to skip it, just skip it. So our next flag is clear OCFO 0 flag. Then we toggle the D3 of R17, and finally we toggle the PB3. So let us move towards the code in Atmel, and we will see its results. 9. So it's our example. Just let me check. 919. So we copy this code from this website. I'll paste the link in the description box. If you want to visit this website, it will be greatly helpful for you guys. Uh, it just saves the times. You don't have to write the code for yourself. So we stop the uh, last code we debugged earlier. Yes. Stepping into the function, and we can see the R24 register has changed from 0x08 to 0x00 to 0x08. We move towards the next instruction in which our R25 register has changed from 0x44, and now the values are changed. Actually, uh, as we saw earlier in our code in our book, that we toggled the D3 of R17. So because of that, our values are altered. So this is it for this code. Let us move towards the next example of ours, which is our example 30. So we left our example. We left at example 930, in which we are going to just let me open the book so we can check the statement.
So yeah, this is our example 930, in which we are stated that assuming x stall is equals to 8 megahertz, write a program that tuples PV5 once per millisecond. So let us see the description first, in which we are told that x stall is equals to 8 megahertz, which means that each clock takes 0.125 microseconds. Pardon me. Now for 1 millisecond delay, we need 1 millisecond over 0.125 microsecond, which is equals to 8,000 clocks. So if we convert that 8,000 into hex, so we get 0x1f40 clocks. We initialize the timer so that after 8,000 clocks, the OCFIA flag is raised, and then we will toggle the PV5. So here is our code in which we initialize the stack. Then we have this PV5 as output, and PV5 is equals to 1. We initialize that, and then we have this PV5 equals to 0 at this, and then we have the timer delay label. We actually created a variable named temp, and we put 0 value in it. Then we have tcn tell equals to 0, tcn t1h equals to temp. Then we have temp is equals to 0x1f, and ocrel is equals to ocr is equals to 0x3f, and ocr1ah equals to temp. So here is our code. So let us see on the Atmos Studio. So here is our code, which I copied from Niceland, as I told earlier in this video. So let us debug this first, and we'll see the okay. So here we have this example of ours, in which we first see the value on R24 is equals to 0x08. Then we have R25 is equals to 0x044, and just wait a second. Okay, so we were here, I guess. So moving towards our next example, which is 931. Let us see if the 931 is same or not. So our example 930 is also same as sorry, 931 is same as 930, so we will skip it for now. Moving on to the next example of ours. Extra. Yeah, these are the same examples. So we will see the different one. So our 935 is that assuming that 1 hertz clock pulse is fed into pin TO, write a program for counter 0 in normal mode to count the pulse on falling edge and display the state of the TCNTO count on port C. So we will see this code on Atmel. So, but first let us see that we included our H file, or the library file. Then we cbiddrb0 make t0 eb0 input. Then we had ldi r20 0xff out ddrc r20 make port c output. Then we have this counter falling edge, and in the again label we have this port c equals to tcn to. Then we are monitoring the TOVO flag. We Then we have this R jump again, so it basically keeps doing it if the timer is 0, flag is low. And then we have out TIFR R16 clear TOVO flag, and R jump means that we will be in this loop basically. So now let us see this code on the Atmel. Let me copy this. So
I don't think the code given here is the same as of this book. So yeah, we actually discussed the code here. So I guess it's fine. So we will move towards our next example, which is of 36, assuming that 1 Hz clock pulse is fed into TOT of like. So it is also same as of 35. So it's also the same. So moving on towards the next example of ours, which is 938, assuming the pulse is fed. Uh, yeah, it's also the same, but let us discuss this in our Atmel 938. So just let me first copy this from the website and then I will paste it on the Atmel and we will discuss it by stepping into the code. So, here is our code. So let us debug it first. So in example 938, we have stated that assuming that the clock pulse are fed into pin T1, PV1, and a buzzer is connected to pin T port C0, write a program for counter 1 in CTC mode to sound the buzzer every 100 pulse. So here is our code. We basically make T1 PB1, which is actually input, then we PC0 as an output, then we have CTC counter falling edge. We have again label. We basically made temp equals to 0. Then we have ORC 1L equals to R20 and OCR 1H equals to temp. And then we have this rjump label, rjump command, which basically says that keep doing it. And then we have clear OCFIA flag, then we toggle the D0 of R17, then we toggle the PC0, and then again we have the R jump again, which means we will be in this loop again and again. So moving towards our next example, which is 939, write a C program to toggle all of the bits of port B continuously with some delay. Use the timer 0 normal mode and no prescale option to generate this delay. So here is our code. We basically uh, made a function of void to delay, and we have this int main ddrb equals to which basically we are making the port B output port. Then we have this while loop, and in which we are port B equals to 0x55 to delay, port B equals to 0 repeat forever, and to delay. And here is our TO delay function, in which we basically loaded TC and TO with 0x20. Then we actually had this timer 0 normal mode and no prescaler. Then we have this while loop, and wait for in this basically this will be waiting for the TF4 to roll over, and then we have this clear TF4. So this was example 939. So let me just copy this code. Example 339. So we will stop the debugging, say B, and we will start the debugging. So we will step into the so here is our 24 is equals to 0x 0 FF. Okay, so I apparently just clicked on some function of admin, and wait a second. So we have this 01 0x01. So we are stuck here. So I guess this is it for example 39. Now we will move towards our next example, which is example 40, and it's again same of 39. So we use CD 41, which is write a program C to toggle only the port B4
wait continuously every 2 milliseconds using use the timer 1 normal one realizing extra is equals to 8 megahertz. So we discussed it earlier. Moving on towards the uh, next example uh, of ours, which is 942, and in which we are stated write a program to toggle only the port B4 bit continuously every second. Use timer T1 and 1 ratio 256. Please scalar to create the delay. Assume x star equals to 8 megahertz. So we will discuss this example here. So we are given that x star is equals to 8 millihertz, that T machine cycle is equals to 1 by 8 millihertz, which is equals to 0.125 microsecond, and this is also our T clock. Then we have the prescaler, which is 1 ratio 256. So T clock is equals to 256 multiplied by 0.125 microsecond, which gives us 32 microsecond. And then we have 1 second over 32 microsecond equals to 31 250 clocks, which is if we convert this in hex 0x7A12 clocks, and 1 plus 0x FFFFF minus 0x7A12 equals to 0x85 EE. So here is our code. We actually made the same function T1 delay, which we saw earlier in our examples. Then we have in main, we decided to made the port B output port. Then we have while one port B equals to port B power of 1 and is less than equal to PB4. So basically we toggle the PB4, and then we call the delay size, and here the delay size is unknown. Then we have this void T1 delay function in which we initialize a time and which whose value is 0x85. Then we have TCN T1L, which value is 0x EE, and we have this normal mode and normal mode 1 ratio 256 prescaler. Then we had this while loop just to wait for the DFO 0 to roll over, and here our we conclude our code. So this was example 42. Let me see if I just ran the example to 50. No, we have to copy this first. So example 42. Here is our example 42. We just wait a second. Just let me copy this, and we will start the debugging. So here is our code 240xff. Then R20 is equals to 0x10. R28 is also equal to 0x10. So R20 is 0C2 F7. So we are here. So we will wait for the TFO to roll over. So this was our example 342. We will see if the next examples are. So C version of example 936. So we actually discussed this. C version of example 937. We also discussed this. So let us discuss this 944 as we discussed the 937 earlier. So it would be much easier for us to understand this example. So firstly, we see that they assume that 1 hertz external clock is being fed into pin T1, PB1, write a C program for counter 1 in rising edge mode to count the pulse and display the TC and T1H and TC and T1L register on port TD and port TC respectively. Then we have solution. So we have this int main in which we activate pull up of PV0. Then we have port C as output. We also have port D as output. Then we have output clock source. Then also output clock source, which is equals to 0x06. Then we set count to 0. Again we set count to 0, and then we have this while loop which will repeat itself forever. So basically now let us move towards the atmel code. So it is our last example. So here is our code. Let me debug this first. So yeah, we will step into this code.
and you'll see that how our code is working. So we have R24 is equals to 0 at 02. Then we see R24 equals to 0 at the FF, and yeah. So just a second. 0 at 00. So I guess the we have to start again. We saw these steps. So I will just yeah. So R30 is equals to 0x85. Then we are stuck in this loop forever. So yeah, this is our example 44. So that is it for today's video. I hope you liked it. I know it's a bit long, but we almost covered all of the examples of chapter 7 and chapter 9. So it was round about 75 examples. So I really appreciate if you watched all of the video continuously. So if you have any questions, please do write them in the comment section. I will love to answer them. And yeah, if you have any suggestions, I will also love to hear them too. So that is it from my side. Yeah, see you in the next video. Till then, Allah Hafiz.